The Kashmir Valley is battling its worst floods in 6 decades. The city of Srinagar is witnessing an unprecedented deluge after torrential rains. Over half of the city is under water after the Dal Lake overflowed and water gushed inside the city. GBM River too is flowing above the danger mark, stranding thousands on rooftops. Water level is above 2 stories at some locations. Meanwhile, over 160 people have been declared dead and South Kashmir has been completely cut off. The worst floods Srinagar has ever seen, at least in the past 60 years. Lifelines of the city, Jhelum and the Dal Lake turned deadly, overflowing their banks, inundating every nook and cranny of the city. This is the kind of water that has come out of the rivers which are flowing way above their normal and usual mark, an unprecedented amount of water, and look at this. This is complete destruction of most parts of Srinagar city. An unprecedented kind of weather has caused it. The city woke up, the ones who could sleep through the numerous alerts and warnings through the night, to a spectre of floodwaters in their houses. None were spared. The VVIPs of the Secretariat, where water entered the heritage building, to the vast Badami Bagh cantonment, throwing the super secure area into disarray. But it was the deluge in the nerve centers of Lal Chowk and Jahangir Chowk which managed to put a brake on the pace of Srinagar. The areas, the commercial and administrative centers of Srinagar, the worst hit. These visuals show the true extent of the emergency in Srinagar. The hospital's first floor completely submerged in the waters of the Jhelum. Needless to say, all operations are at a complete standstill and all patients have been evacuated to other hospitals. Outside, even entry to the hospital is impossible with the main gate totally underwater. You can see here I am in the Lal Chowk, which is the hub, business hub of Srinagar city. You can see the stream of Jhelum now flowing through this road which heads towards the central market of Lal Chowk and then towards the civil secretariat of Srinagar. Everywhere government is now defunct completely because there are not offices, there are not sources to operate for the government. Not only this, but even the biggest hospital, children hospital of Srinagar, which is the GBM Hospital, is almost 1 floor underwater, and now more than 700 children are being treated there. They are being shifted to the upper floors, but so far not any kind of full rescue is reaching to them. Thousands of Srinagar residents pushed to rooftops, looking for anywhere to escape the waters, looking to be rescued, their belongings destroyed by the floods. Most of the damage to the city is concentrated on the banks of the Jhelum in the south as well as in the central areas like Lal Chowk and Jahangir Chowk, which lie between the river and the Dal Lake. We are actually on one of the rescue parties, and this is how trucks are being sent in, and somehow people are trying to get out with the rescuers. This team has just got out this bunch of people from one of the affected area and now are bringing them back to safer locations. These are the kind of visuals that we're witnessing all across. With the cameraman Tariq Shujaul Haq in Srinagar for Headlines Today. For more on the relief and rescue operations in Jammu and Kashmir, let's just go straight to OP Singh. He's the DG of NDRF, that is of course spearheading the rescue efforts. ऑपरेशंस कर रहे हैं. कई जगहों पे इस प्रकार की सूचना मिल रही है कि लोग स्ट्रैंडेड हैं या ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं. जहां तक संभव हो पा रहा है हमारी टीम वहां पहुंचकर उनको बचाने का प्रयास कर रही है और उनको निकालने का प्रयास कर रही है. कुछ दिक्कतें हमें आ रही हैं, जैसे कम्युनिकेशंस नेटवर्क जो है वो काफ़ी प्रभावित हुआ है, जिसके कारण कम्युनिकेशंस एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल हो रहा है. साथ ही साथ बहुत सी जगहों पे रोड नहीं है, रोड बर्बाद हो गया है,
ध्वस्त हो गया है। उसके कारण टीम्स को भेजने में दिक्कत हो रही है। मोस्ट ऑफ द टीम्स वेर एयरलिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। और साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे ब्रिजेस हैं वो भी वॉश आउट हो गए हैं। एक दो मेजर ब्रिज भी वॉश आउट हो गया है। तो इस प्रकार की कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद एनडीआरएफ की टीम जो है वो निरंतर लगी हुई है और लोगों का बचाने का कार्य कर रही है। अभी हम सैटेलाइट फ़ोन्स भी भेज रहे हैं। हमारे पास वहाँ काफ़ी संख्या में सैटेलाइट फ़ोन्स हैं जिससे हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क। और कुछ सैटेलाइट फ़ोन हम वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनसे भी हमारा निरंतर संपर्क बना रहे। इसके साथ ही साथ हम टेंटेज को भी भेजने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वहाँ पे लोगों के रहने के लिए टेंट्स वगैरह, हम अभी लगभग 1500 टेंट्स गाज़ियाबाद से भेज रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि किस प्रकार हम जल्दी से जल्दी उनको पहुँचा सकें। तो यही अभी तक की स्थिति है। अगर कोई प्रश्न अगर आपको पूछना हो तो आप बताएं। 3500 से ज़्यादा, 3500 से ज़्यादा। I'll give you the exact figure। पानी का लेवल क्या बढ़ रहा है? पानी का लेवल तो अभी बना ही हुआ है वैसा, और रिसीव करने के बाद ही स्थिति पता चलेगी कि कितना वो हुआ है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने 3258, हमें लगता है 3500 के लगभग फिगर पहुंच गया है अभी तक, उसको वो किया है। और इट इज़ 3931, एग्जैक्ट फिगर इज़ 3931 people have been saved and 13 dead bodies have been recovered along with 3 cattle. This is the latest figure. 13 dead body आज? नहीं, टोटल अभी तक 2-3 दिनों के अंदर में एनडीआरएफ ने निकाला है। टीम किस तारीख से वहाँ पे, मतलब कब से? 6 तारीख से। 6 तारीख से है? 6 तारीख से। 5th शाम को पहुँच गई थी, लेकिन 6 तारीख से उनका ऑपरेशन शुरू हो गया है। तो इस प्रकार है। और सभी सहायता की जितने भी हम कोशिश कर सकें, हमारा जो रेस्क्यू बेस्ड इनिशिएटिव जो भी हो पा रहा है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी 9 बजे तक हमारी और भी टीम्स पहुंचेंगी और उससे हम और भी अपने एरियाज़ को वाइडन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम रेस्क्यू वर्क कर सकें। सॉरी, कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है? अभी वैली जो है सबसे ज़्यादा, और साउथ ऑफ कश्मीर जो है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। उसके बहुत सारे मोहल्ले हैं जो सबमर्ज हो गए हैं, उनमें पानी बहुत फैला हुआ है। लोग जो हैं रूफ टॉप्स पे हैं और हमारा प्रयास यही है कि हम वहाँ बोट्स भेजकर, अपने डाइवर्स को भेजकर उनको बचाएं और उनको रेस्क्यू करें, उनको इवैक्यूएट करें वहाँ से। हम लोग अभी बोट्स भी भेज रहे हैं। हम लोग गांधीनगर और पुणे से 50 बोट्स भेज रहे हैं जो एयरफोर्स की का जहाज़ जो है वो उनको एयरलिफ्ट करेगा। एक ट्रिप वहाँ से एक सॉर्टी लग चुका है और रात के 9-10 बजे तक हमारा टोटल हमारे 108 बोट्स वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा लेटेस्ट अपडेट है फ्रॉम एनडीआरएफ। अच्छा, ये जो पानी सारा आया है, ये कौन कौन से मेन रिवर है जिससे कि सारा फैल रहा है? एक्चुअली तावी रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा है, झेलम का भी है, इन दोनों में मैक्सिमम वो हुआ है। और ये जो लेवल बढ़ा है इसका कितना टाइम पहले से मतलब ये पता चल जाता है? ये पता चल रहा है कि कोई एम्बैंकमेंट ब्रीच हुआ है, उसके कारण वो हुआ है। अदरवाइज बारिश तो नहीं हो रही है, एम्बैंकमेंट के कारण से हुआ है। लेकिन जो भी हो, लेकिन पानी काफ़ी बढ़ रहा है और पानी काफ़ी भरा हुआ है। काफ़ी मोहल्ले हैं, जैसे रामबाग है, राजबाग है, इंदिरा नगर है, जवाहर नगर है, शिवपोरा है, महजूर नगर है। इन सब इलाकों में काफ़ी पानी भरा हुआ है और उसमें इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं। इतना वो टाइम नहीं था कि जो उसको पहले से अलर्ट कर सके लोगों को? नहीं, ये अचानक हुआ है। इस तरह की बात कल तक ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक इस प्रकार का वाटर लेवल राइज किया है। लोगों को इंतजाम करने का टाइम नहीं। ठीक है, फिर थैंक यू सो मच। That was the DG NDRF giving us an update about the relief and rescue operations that the agency is in fact conducting in Jammu and Kashmir. The extent of destruction in the valley can be gauged from the army statement.
That said, the situation in the state is as grim as it was last year in Uttarakhand. The armed forces have launched a massive rescue operation to save those trapped in the flood fury. 5 C-130J Hercules aircraft have been pressed into service to carry flood relief material into Jammu and Kashmir. 1 heavy lift C-17 and 2 IL-76 aircrafts along with a slew of AN-32 aircrafts and 26 helicopters have also been pressed into action. Apart from the NDRF and Army engineering teams, boats from Pune, Gandhinagar, Ghaziabad and Kanpur are being flown in along with blankets, tents and other relief materials. Kashmir Valley is witnessing an unprecedented kind of flow of water. As you can see, complete inundation of roads and all other areas. These are the main roads of the valley, and this is the condition. Water has gushed into almost all main roads and main colonies. People are being evacuated with great difficulty. We are actually on one of the rescue parties, and this is how trucks are being sent in, and somehow people are trying to get out with the rescuers. This team has just got out this bunch of people from one of the affected area and now are bringing them back to safer locations. These are the kind of visuals that we're witnessing all across. With the cameraman Tariq Shujaul Haq in Srinagar for Headlines Today. Headlines Today has received some visuals of the GBM Hospital in Srinagar, the only hospital in the valley specially for children. These visuals show the true extent of emergency in the capital of Jammu and Kashmir. The hospital's first floor is completely submerged in the water of Jhelum. Needless to say, all operations are at a complete standstill and all patients, children of course, have been evacuated to other hospitals. Outside, even the entry to the hospital is impossible with the main gate totally underwater.